हम्म, तो पहला सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया था, कंटेनर कंटेनर टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो अब सेकंड चैप्टर में हम पढ़े क्रिएट अ कंटेनराइज्ड सर्विसेज। कंटेनराइज्ड सर्विसेज कैसे क्रिएट करते हैं, दूसरा इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, देखेंगे। आप भी पढ़ो, मैं भी पढ़ता हूँ, कई चीजें हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। मेरी आवाज अगर ऑडिबल हूँ तो ठीक है, सही है। तो स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में पढ़ने के लिए वी हैव टू लर्न दीज थिंग्स मीन्स goal we can learn. What is the goal for this chapter? This chapter is goal means provision a service using container technology. Provision means service creation, ठीक है। पहले देखेंगे यूजिंग दैट कंटेनर टेक्नोलॉजी यूज करके सर्विस को प्रोविजन करें, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? Very container development environment. Obvious it's showing disconnected by dot सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले तो यही देख लेंगे, दूसरी चीज है। जो दूसरी चीज है उसमें दूसरा पार्ट है इस चैप्टर, क्रिएट अ डेटा सर्विस फ्रॉम अ कंटेनर इवन स्टोरेज डॉक्यूमेंट। ये लैब देखेंगे, क्रिएट अ डेटा सर्विस। मेरे पास डॉकर है, ठीक है, डॉकर है और डॉकर अब रजिस्ट्री भी है। तो मैं तो कर लूंगा अभी प्रैक्टिकल। अगर आप पास ना हो तो ट्राई करो कि डॉकर अब इंस्टॉल करो। बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है, ठीक है, यूट्यूब पे जाओ और वीडियो देख के इसको इंस्टॉल करो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव गोल सेक्शन क्या क्या? Building a development environment and identity. Actually, it's type of building a development environment. Lab क्या है? Can create a containerized service. ये सब चीजें हैं जो कि हम पढ़ेंगे। और आज हम लेते हैं हम तो सकते हैं। और तो पहलो ठीक है। तो building a development environment, building a development environment. Objective क्या है? तो students should be able to identify three ways to build environment. Three ways to build environment where you can build, test, and deploy. Container, build and test and deploy. Three ways. ठीक, three ways. देखते कौन कौन से three ways हैं। Describe the process for deploying container with install. Describe the process for deploying container with. Can describe a process for deploying container with installed OpenShift cluster. Describe the process for the developing containerized application locally using Red Hat. Describe the process for the developing container application locally using Red Hat container.
development kit, सॉरी, यूजिंग मिनी शिफ्ट। एक मिनी शिफ्ट होता है, ठीक है, एक मिनी शिफ्ट है, इट्स अ गिवन by the Red Hat people. It's lightweight. We can install it. It's just like a mini cube. In that Kubernetes, one term is the mini cube. Same thing. Red Hat people developed one kit called mini shift. Next, we able to understand after completion of this chapter, run an OpenShift cluster locally with the OpenShift command line interface and Docker. लोकली कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो पहली हेडिंग है अपनी कंटेनर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सिनेरियो। कंटेनर डेवलपमेंट सिनेरियो क्या क्या हो सकता है, ठीक है। Container images are usually developed locally on the developer's workstation. After a container image has been tested and accepted, there are many ways to automate building container image. In this course, we develop container image. In this course, we develop container image using Docker. In this section, we develop container image using Docker. Containers are deployed and tested on both Docker and Red Hat OpenShift Container Platform (OCP). क्या बोला? Container are image developed locally on the developer's workstation. After a container image has been tested and accepted, there are many ways to automate building container image. In this code, we develop container image using Docker. The following scenario represent three development environment to containerized application. First, install OpenShift cluster, Red Hat Container Development Kit or HCD, and local OpenShift cluster. Install OpenShift cluster. Install install OpenShift cluster first. Red Hat Development Kit and local OpenShift cluster. First, the install OpenShift cluster. An installed OpenShift cluster is one is which is the OpenShift software is installed using RPM method. The OpenShift and Kubernetes process run as a service. Run as a service on the operating system. The cluster might be installed by the customer or the customer might use the Red Hat OpenShift online or Red Hat OpenShift dedicated environment. All of these type of cluster are accessed remotely using an OpenShift web console or the command line interface. This method of installing OpenShift is designed for permanent cluster, usually used by many users simultaneously. This installation method is beyond the scope of this course. This installation method is beyond of this scope. ये installation इस कोर्स से अलग, ये installation लग गई, ठीक है। और का installation वही है, इंस्टॉल ओपन शिफ्ट क्लस्टर, देखो
क्या बोल रहा है? open cluster might installed by the customer or by the customer might be used Red Hat online or Red Hat development dedicated environment. These are the cluster are accessed remotely. इनको हम remotely भी access कर सकते हैं. Install by the customer might be used Red Hat OpenShift online or Red Hat OpenShift dedicated environment. Remotely accessed. You have to remotely access using OpenShift Web Console or command line interface. Remotely access, remotely access using the OpenShift Web Console. Remotely access OpenShift Web Console. Remotely access OpenShift Web Console. This installation method is not for this course. इन्होंने mention कर दिया है बुक में कि ये installation इस ये नहीं. This installation not relevant for this course. Next note. In the note में दिया है इन्होंने Red Hat training offer the Red Hat OpenShift and DO 280 course which provide the instruction and hands-on experience installing and configuring Red Hat OpenShift cluster platform. ये DO 280 ये जो ट्रेनिंग होती है ना ये देता है कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं उस RHOCP तो लोकल ओपनशिफ्ट क्लस्टर anywhere Docker is supported and the OpenShift client can be installed. A local OpenShift cluster can be created using OC cluster up command. In this configuration, OpenShift run a single node, single master cluster, single node, single master cluster in a single container. Internal cluster service such as router runs an additional container. The cluster can be ephemeral or persistence. Ephemeral means delete भी कर सकते हैं. वो कल क्या आता है? Single node, single master, cluster in single container. Red Hat Container Development Kit. Red Hat Container Development Kit CKD version 3 is developed from upstream project called MiniShift. Upstream project. Yeah, this is the upstream. Downstream is the Red Hat. ठीक है, Red Hat OCP, the downstream. Downstream, upstream कुछ nothing is like ये डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम पता क्या बोलना है? ये बोलना कि ये जो जो अपनी ये रेड हैट कंटेनर डेवलपमेंट किट है ना ये टॉप ऑफ द रेड हैट कंटेनर ओसीपी पे बनी है. ये बोलना चाहता हूँ. ठीक है. Version 3 is developed from upstream project called Minishift. This CKD contains a single binary called Minishift. From this binary can virtual machine disk image can extracted. This disk image is built using Red Hat Enterprise Linux 7. This Minishift command is used to create a virtual machine that runs Docker and local OpenShift clusters. Developer can access the OpenShift cluster using the
command line. Installed by the minishift command. Minishift supported Linux, Mac OS, and Windows operating system, and many type of virtualization technology, including KVM, VirtualBox, and Hyper-V, and more. This disk image is built on top of AWS 7 builder. The minishift command is used to create virtual machine that run Docker and local OpenShift clusters. सिस्टम में WSL वगैरह लगते हैं सॉल्व हो जाता तो ठीक है। या तो इसको अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करना पड़ेगा डॉकर। ठीक है, तब तक इसको चलने दो, हम आगे पढ़ लेते हैं। Hmm. Developing with Red Hat Container Development Kit. Red Hat download the appropriate ये कैसे करते हैं development kit binary from a system in additional to CKD binary. You can need to install and configure the virtual software compatible with the operating system. The following is the list supported hypervisors sorted by the beam, like Windows के लिए Hyper-V or VirtualBox. The following procedure assume that CKD is running on Mac OS or Linux. This minishift binary by renaming in the it to minishift and setting the execute permission using the chmod command. Change the user mode, read, write के permission देते हैं इसको. Run the following command to allow minishift
to do its required setup. Except reset that of CPU. So, five, CK, CDK. F, shift, C, then chat GPT use chat GPT यूज करें तो उसको फिक्स करना है टेस्ट करूंगा fix this cloud code is not showing this person cheated. So proposal icon list icon visual was reason we can resolve this and foreign history competence Debian sushi किसका रिसीव करना चाहिए
Ubuntu. Ubuntu is going to ये WSL डाउनलोड करना कि डॉकर हो जाए ना ये उसके साथ पढ़ तो हम रहा है ठीक ठीक इसको होने ये सेटअप अगर हो जाएगा तो सही है नहीं तो फिर देखेंगे ठीक है तो this command unpack the RHSL 7 iOS file and OpenShift command line OC in the .minishift cache directory डायरेक्टरी बन जाएगी ठीक है मेक श्योर दैट minishift cache OC 1.1 is in the environment path so the OpenShift command line interface can execute it. The version number of the path may vary with the specific version of the CKD. Minishift config view command show all the properties that are set for the creation of the virtual machine and OpenShift cluster. To update value, use the Minishift config set property and value command. The most common property include VM driver to specify which machine driver Minishift will use to create, run, and manage the VM. Which Docker and OpenShift run. See the documentation, use the value. See PUS specify the number of virtual CPU in the virtual machine memory. OpenShift the specific. The more option can be uh, displayed with that config command. The Red Hat credentials set करते हैं ठीक है start stop delete initiate access command. If the developer need to access the virtual machine directly to run minishift sh command to determine the status of the virtual machine, run minishift status command. Minishift console command, developing the local OpenShift cluster. Demonstrating building a container development environment. So, just Docker version, and OC or grab hyphen insecure etc system config Docker. Take that folder hyphen and default. So the registry. Problem.
अगर डॉकर नहीं चलेगा ना तो अपने को रीस्टार्ट ठीक है। तो हम थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेंगे, ये तब तक रीस्टार्ट वगैरह हो। देन वी टेक अ ब्रेक सम टाइम, आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट नेक्स्ट लर्निंग फेज। ठीक है, लेट्स टेक अ ब्रेक गाइस।
ठीक है guys, back. So break time is over. Okay, now my screen I think it's visible to you, everyone. तो अभी हम पढ़ रहे थे जो कुछ भी, तो हमने अभी डॉकर अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करूंगा, तो मैं ऑन कर लेता हूँ इसको। इंस्टॉल करूंगा, दोबारा रीइंस्टॉलेशन हो रही है, एक बार अनइंस्टॉल मैंने कर दिया इसको प्रॉपर। ठीक है, तो ये शॉर्टकट चाहिए है, ठीक है। इंस्टॉल होगा, ये टाइम लेगा थोड़ा सा इंस्टॉल होगा, तब तक हम पढ़ते हैं अपना। ठीक है, ऊपर से पढ़ रहे थे अपन, हाँ यहाँ पे थे। यहाँ, ठीक, वहीं से। डेवलप डेवलपिंग द रेड हैट कंटेनर डेवलपमेंट किट। जो रेड हैट डेवलपमेंट किट है उसको इंस्टॉलेशन की स्टेप्स लिखी हुई है इसमें कुछ। ठीक, क्या है? क्रिएट डेवलपमेंट यूजिंग CKD वर्जन 3। The CKD downloaded from Red Hat Developer Portal at redhatdeveloperportal.com। ठीक है, look for it in the technology section of the website. The mini-shift binary come in three different forms: Linux, Mac OS, another। अच्छा, मैं OS, ठीक है। हम्म, ठीक है। अभी मुझे क्या देखना था, क्या देख रहे थे अपन? हाँ, डेवलपर पोर्टल पे ना, एक बार वो देख लेते हैं डेवलपर पोर्टल पर। हम्म, इसको हटाता है, ये कॉपी करना है। सी, ठीक है, इसको बाद में चला लेंगे कमांड को, कंट्रोल पैनल भी हटा देते हैं। ठीक है, अब हम डालते हैं नोटपैड, नोटपैड, नेक्स्ट, अब इसको, ठीक है, देखते हैं डेवलपर पोर्टल को कहाँ से CKD डाउनलोड होता है। लेट्स सी, रेड हैट डेवलपर्स, ठीक, और रेड हैट डेवलपर लॉग इन कर लेते हैं। लॉग इन, साइट तो मेरी आईडी विवेक 2030 है। अपना नहीं, आपका अकाउंट ना हो तो एक बार अकाउंट इस पे बना लेना, ठीक है। लॉग इन हो गया शायद से, सेव, ठीक, सेव कर दो इसको। रेड हैट प्रोडक्ट, अब देखो बुक्स, ठीक, ये बुक्स है, सीट है, लर्निंग रिसोर्सेज है, सब कुछ है इसमें। बुक्स वगैरह देखो, पॉडमैन इन एक्शन की बुक है, इसके बाद गिटऑप्स की बुक है, ओपन सोर्स एआई डेवलपर है, कुबरनेटिस पैटर्न की बुक है, ठीक है, रेड हैट एआई, पॉडमैन डॉक टॉपिक, रेड हैट डेवलपमेंट हब, बहुत सी चीजें, रेड हैट ओपन से, ये देखते हैं पहले इसकी बुक है क्या कोई। ये देखते हैं क्या बुक में है इसमें, डाउनलोड करते हैं इसको, देखते हैं पैसे लेता है या नहीं। ओपन शिफ्ट एंड रोमाइजिंग, डाउनलोड होनी चाहिए थी, डाउनलोड हो गई। डाउनलोड कर सकते हैं, ये बुक्स है अपनी सारी, रेड हैट साइड एपीआई ओपन शिफ्ट, रेड हैट ओपन शिफ्ट सीट की। अब इसको एक बार ओपन करके देखते हैं। ठीक, ये है कंटेनर, कॉमिक टाइप की बुक है, तो बढ़िया लिखा हुआ ना, इसको भी हम देख लेंगे। कॉडमैन, यूजिंग कॉडमैन, ठीक है। करायो, ये भी कंटेनर होता है जब यूज होता है कॉन्सेप्ट के अंदर, ठीक है। ओपन शिफ्ट,
ये स्टोरी टाइप की बुक है कुछ है ना, कंटेनर बेस्ड है। ठीक है, रेड हैट शीट देखता हूँ क्या है। लीड क्लस्टर मैनेजमेंट भी बढ़िया की बुक, ये सही है। हम अपन ये बुक्स वाला सेक्शन को बुक मार्क कर देते हैं अपने, ठीक है, बुक मार्क में डन। अब हम देखते हैं लिनक्स की स्पेशल कमांड्स। ये डाउनलोड करता हूँ। अभी हमें डाउनलोड कुछ और करना था, बुक मिल गई तो मैं बुक को ही डाउनलोड करता था। ओ सी पी और ओ सी पी है, वो बुक नहीं होगी एक, क्योंकि ओ सी पी की इसलिए नहीं है। सो द रिजल्ट, रेड हैट एंटरप्राइज है, जी बॉस, कंटेनर, रेड हैट बिल्ड शीट, शीट डिस्कनेक्टेड एनवायरनमेंट। लिनक्स कमांड कुछ होंगे, एडवांस कमांड है इसमें। ये हाँ, इनको भी डिस्कस कर लेंगे वरना है ना, सेशन में कभी प्लान करते हैं सेशन, है ना, लाइक पढ़ते हैं इनको भी। मेरे हिसाब से तो बढ़िया कमांड लग रही है, गेट सोर्स। तो बाकी देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, अब आते हैं अपन कहाँ पे प्री बुक होगा। अभी कहाँ पे बोला था ना, डेवलपर एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन इन द वेब टेक्नोलॉजी। सी के लिए क्या, लिनक्स कुबरनेटिस ऑटोमेशन। लिनक्स फॉर डेवलपर्स एप्लीकेशन एंटरप्राइज कुबरनेटिस कंटेनर। सी के डी है, सर्चिंग है। Red Hat Container Development Kit. Docs, overview, hello, view the download. Delivery and application unlimited talents. So, not found. The source you have requested are you should remove the right. So it was connected with the thing. No post out itself. It's कुछ है।
Great cloud console. iOS email सबसिस्टम वगैरह डॉकर इंस्टॉल हो गया क्या? क्रूज देखते हैं डॉकर इंस्टॉल की क्या? डॉकर स्टार्ट हुआ कि नहीं ये देखने की बात है ना। ठीक है। अब सब जस्ट एक तीन मिनट लॉग इन करता हूँ। देख रहा था यार प्रैक्टिस पर्पस से चाहिए ना मैं तो। अगर हो जाता है तो ठीक है यार स्टार्ट हो जाए डॉकर भाई। वर्चुअलाइजेशन ऑन है यार वर्चुअलाइजेशन ऑन। टास्क मैनेजर पे गया ओपन परफॉर्मेंस सीपीयू वर्चुअलाइजेशन इनेबल्ड इनेबल्ड है वर्चुअलाइजेशन क्यों नहीं मिला डॉकर पे रन क्यों नहीं मिला डॉकर। कुमार विवेक लो वगैरह पूछते हैं। Distribution take that talk on. WSL -hyphen install -d Ubuntu। ये सब प्रॉब्लम्स हैं जो हम रियल टाइम में फेस करते हैं इसीलिए मैं लाइव चलता हूँ। ये बेस्ट होता है कि हर चीज अपन सेशन बना के नहीं दिखा सकते हैं लाइव में। प्रॉब्लम आएंगे उसको तो चैट जीपीटी कैसे यूज करना है वो भी यूज करो। ठीक है।
So these are the processes we can follow as day by day activities. And previously, by mistaken, I think I have uninstalled the WSL. I think so, but I don't know when. Let's see what happens. Let's see what happens. Every problem have a solution. Every problem have a solution. So wait some time. Install on. Let us see. अब सब कुछ एवरीथिंग we will do by installing error क्या आ रहा ये देखना क्या है कोई दिक्कत नहीं है यार एवरीथिंग है प्रोसेस ठीक है सजेशन दिया ना कुछ तो दिया होगा error was running could not be started because the required feature is hypervisor relaunch virtual box ये error दे रहा है हमें ये universal 500 skip कर इसको
कटेगी मैं बोला ना, तो मैं चैट जीपीटी को रिस्टार्ट फैचिंग इस रिकॉर्ड। तभी ये नहीं हो रहा, रीस्टार्ट करना पड़ेगा मुझे एक बार सिस्टम। मैं एक बार रीस्टार्ट करूंगा ना, बाद में अगर मैं रीस्टार्ट करूंगा तो लाइव एंड हो जाए, तो आई डोंट वांट टू लाइक रीस्टार्ट। सो ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम। डेफिनेटली इट विल सॉल्व ना, डेफिनेटली इट विल सॉल्व। When you hit WSL hyphen hyphen list and hyphen hyphen verbose, then you will get this type of response. Then your Docker is running and all set. Okay, okay, all set. So let's discuss our today's discussion and practical. We will see in that next when I install all the required things. So CKD, you can in the additional to the CKD binary, you need to be install and configure virtualization software capability with operating system. Okay, that is that is list of supported. देखो Mac OS में KVM डिफॉल्ट होता है and virtual box we can install. विंडो के लिए Hyper-V और डिफॉल्ट होता है, Linux होता है. The following procedure assume that the CKD is running on Mac OS or Linux. Prepare the minishift binary by renaming its minishift and and minishift and its the execute permission using the chmod run that command to allow the minishift to its required setups. Right. This command unpack the RHEL7 iOS and OpenShift command is OC. In that minishift cache directory will be available. That is that command OC. Minishift cache is in that environment part, so that OpenShift command can be executed. The version number is the path may vary in with the specific version. The minishift the minishift config view command show all the properties that are set for that creation of the virtual machine and OpenShift cluster of the update value in the minishift. ये कुछ ड्राइवर्स देने कि हाँ अपना मिनीशिफ्ट ट्राई करना चाहते हैं, कहाँ पे ड्राइवर दे, तो ड्राइवर देते हैं कमान CPU specify the number of CPU the virtual machine will okay. The amount of memory in MB that the virtual machine will allocate. OpenShift version. The specific version of OpenShift हो गया, CPU हो गया, CPU, मेमोरी, OpenShift वर्जन, ये सब चेक करता है. और ये कमांड होती है मैनी शिफ्ट यूजर नेम एंड रूट, मतलब जो हमारे पास लॉगिन, अभी जो मैंने लॉगिन बनाया था ना, द login we need to put here, then you can install the virtualbox hypervisor like that as a start command you can use. So that allow minishift to register the virtual machine to the Red Hat customer portal. These are the required parameter and allow package to be installed on the virtual machine. Developer can sign up for the developer account. Red Hat OC command can now be used to access the OpenShift cluster using the server address listed in the output of the dot .minish start command.
When the developer is finished with the cluster, the command minishift stop can be issued to destroy the virtual machine and lose all work run under minishift delete command. To if developers needs to access to the virtual machine, no, to destroy the virtual machine and lose the work to run the minishift delete. Minishift status command to determine the status. To launch web console, use this minishift command. Right. Developing with the local OpenShift cluster. ये भी इम्पोर्टेंट है, ये पढ़ता थोड़ा ध्यान से कि लोकल OpenShift cluster क्या होता है. So if the developer workstation can run Docker and OpenShift command line interface. OpenShift command line interface. See, developing with the local OpenShift cluster. If the developer's workstation can run Docker and OpenShift command line, no, this command line interface. Wait, interface and command line clusters can be created without a virtual machine. Can be created without a virtual machine. The OpenShift client is available for the Linux, Mac OS, and Windows. OpenShift client available for Linux, Mac OS, Windows. The client can be downloaded from Red Hat customer portal, install and clone following the directory for the relevant operating system, run the OC version command to verify the installation. The Docker daemon default configuration consider the following OpenShift cluster registry. ये प्रैक्टिकल सेशन है, तो चलो ना प्रैक्टिकल है, वो थ्योरी पढ़ लेते हैं, प्रैक्टिकल हम कभी और सेशन प्लान कर लेंगे एक. ठीक है. जहाँ some other session we will plan, there we can read and do the practical, all the practical by using ChatGPT, DeepSeek, Grok. So Docker daemon default configuration consider the local OpenShift cluster registry and increase one because it uses a self-signed certificate SSL.
is to use the self-sign certificate and refuse to pull the image from it to allow creating container from image created using OpenShift S2I feature. The Docker configuration has to change to allow using the OpenShift increase registry in secure registry. added the added the etc system config docker file and modify the insecure registry parameter as follow. Insecure registry parameter insecure and for the IP. So in this acceptable to have more than one insecure registry define list each insecure registry on the same line on Docker or for Mac OS. This setting is made through Docker for Mac preferences on daemon that after making this configuration restart the Docker daemon. The cluster is started on the local machine using OCP cluster up command. For the information, this command run OCP hub command. It is often too desirable to configuration persistent cluster. A persistence cluster one in which the configuration of the following data is the preserved over a shutdown of the cluster. For persistent cluster, the following command line option are recommended. Use command line argument. This is the command line argument option or command line. Tick. If a configuration already exists, it is reused. Otherwise, the new default configuration is created. If configuration is exist, not used. Otherwise, default configuration is created. Default configuration is created. Host config directory specify a absolute path to storing the relevant cluster configuration. Storing a cluster configuration files. The default value is where live origin. Host data directory. The specify where etcd OpenShift cache data will be written if the host data directory option is option is not specified. No data will be saved and cluster state will be not be preserved otherwise. If option is not specified, no data will be saved to cluster state, not preserved over the shutdown. Host volume directory. Specify where Kubernetes volume will be written. The default value is where lib slash origin OpenShift local volume. The version of OpenShift can be controlled by the some let's say hyphen host data directory hyphen host config directory use hyphen existing config. ये host config directory क्या करते हैं host config directory को storing the cluster configuration और host data directory क्या करती है etcd की इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है host वॉल्यूम को स्टोर करने के लिए काम करता है रिटर्न विल बी वॉल्यूम्स विल बी रिटर्न some specific directory. The version of OpenShift can controlled by version option. In an example, version 3 is the developer need to retrieve the OpenShift container image from a location other than registry.access.redact.com. The complete image can be specified using hyphen image option. The following is examples. OC cluster of hyphen image. The complete shoot of OpenShift container. The controller, the router default subdomain
use the routing suffix option. The host name of the web console can be set using the hyphen public host name. Building a container development environment. Workstation was necessary to OCP lab example.com as the student stable the Docker as well installed. Docker content running Docker version check कर लिया stable releasing the SO concept OC version check कर लिया installed Kubernetes का ये version है features basic auth verify grab hyphen verify has been set up the insecure registry etc sysconfig docker so the change was actually allowed but review the output of the OC cluster up by funding the configure cluster data by using the default name for the hyphen host config directory host data directory use existing config version examine the OC cluster up host student OC not as a self script discover the purpose of the values to each command line option the script the classroom set runtime bring a cluster up running login to the system user admin default admin display the containers that are running on the OpenShift cluster. With this method to running a OpenShift cluster, the only thing installed on the operating system in the OpenShift command line interface exist one messages sent on the OCP server. You should now be logged in as a student on the workstation server. Access the OpenShift cluster remotely using OC login command and display the same ports. Developer account. Cluster down, OC cluster down.
इसका सपोर्ट ओके डी। ये एक्सरसाइज है, इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट ऑन ओपन सेट क्लस्टर। अगर जो क्लस्टर हमारा सेटअप होगा तब तो ये हमें पढ़ने में भी बनेगा, अदरवाइज नहीं। तो कुछ डॉकर की हैं कमांड, तो हम देख लेते हैं। स्टेप्स वन, check docker is installed and running ssh ocp. ocp vm is already configured to ssh connection, ठीक है। then it will come into that ocp rpm hyphen q docker, check the docker rpm package is installed here, installed docker services isolated active, ठीक चेक करी। atomic openShift cluster packing install, atomic openShift cluster, start the persistence all in one ocp, ocp up.sh cat, इस फाइल बनाई मैंने ना, इस फाइल बना के इस कट को दिया ssh, invoke the script to start the ocp cluster, original container is running docker ps। up, up is equals to 0, then you can get it, otherwise OC cluster status graph started WC login, check the port, access the web console, login, share cluster। अब ये वाला जो माथा दिया ना, प्रोविजनिंग एंड डेटा सर्वर, एग्जाम्पल लिया एक सब। क्लस्टर अपना अगर रेडी हो जाता ना, तब हम ये सब कर सकते हैं। उसके लिए मेरे को सिस्टम को रिस्टार्ट करना पड़ेगा, तो मैं रिस्टार्ट करता हूँ। यहाँ तक ये लैब है सारी, ये लैब्स है ना, लैब बढ़िया लैब है, तो इनको हम करेंगे। पहले मैं इसका सेटअप कर लूँ एक बारी, सेटअप करके मैं रीस्टार्ट करता हूँ ना, डॉकर इंस्टॉल करके फिर ये देखता हूँ, फिर मैं इससे कुछ पूछूंगा ना, सब लाइव देख लो, ठीक है। ये वाला मेथड है, इसको ही हम ट्राई करेंगे, कौन सा, ये वाला है ना। थर्ड मेथड, वी हैव अ थ्री, थर्ड मेथड ना, वी हैव थ्री मेथड्स, लोकल ओपन क्लस्टर, किट्स नहीं,
Tradition is some considerable by using this route to install OCP in local, give the proper steps. पहले इसको पढ़ेगा तो setup local control using the information you have provided, which is the purpose of the context. System that important open integrated, not supported in OpenShift codec. For the learning or legacy testing, this is still work with the Docker and Linux. OpenShift 4 used to like code ready container instead of OC cluster. So pre-release Docker install, OC client OpenShift CLI install, virtualization enabled, 8 GB RAM and 2 CPU. ठीक है, step by step guide. Install a Docker. Must install Docker. Ensure the registry setting needed with OpenShift install. Sudo vi go to the Docker desktop setting, timer, add this and secure registry, install the CLI, people name, and let's change. तो वहां पे हमने पढ़ा और ये स्टेप्स इसने बना दिए हैं। इजी इजी बहुत इजी पढ़ने के लिए यूज ठीक है गाइस गाइस क्या करते हैं ना अभी अपन इसको स्टॉप कर इस सेशन को इस लाइव को और एक बार और लाइव स्टार्ट करेंगे मैं एक बार रीस्टार्ट वगैरह कर लूँ अपना सिस्टम ठीक है फिर देखते हैं थैंक यू और डॉकर एक बार मैं रन कर लूँ फिर ठीक है फिर करें